Hello. Yes, sure. Yeah. No, sir. No. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How Good are you? evening, sir. Fine, sir. Present sir, आपली lecture. Present sir, आपली lecture. Hello, Rinku ma'am. Hello, present sir. Rinku ma'am, you can continue with your lecture. Hi, sir. Hi, sir. Good evening. Yes, yes. I made you co-host. Good Okay, evening, thank you, sir. sir. Okay, okay. I'll just share the screen and we'll start the lecture again. And this was Ms. Maham's lecture. I beg your pardon? And in link ma'am, Ms. Maham's lecture was written. So you are taking. I'm sorry, I did not quite understand what you were saying. What is it? What is it that you were saying? Anji? Ma'am on 5 o'clock, 2 lectures are there. Huh? Ms. Ma'am and of yours. So we have put on the Ms. Ma'am's link. So your name task is coming. So you are taking. I don't know. I have started the one that I was supposed to in NDA. I don't know which batch you were supposed to attend. Okay ma'am, I'll try again. I'm sorry, Bacha. Okay, good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. All right. Good You evening. people are on. हाँ जी, good. नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. हाँ, we were doing this. Which standard is it? Oh, बाप रे, okay. This is NDA and SPI, and I think this is a joint thing for both NDA and SPI, as far as I know. I suppose even Yes, ma'am. RIMC, everybody else is also welcome, I guess. It's a universal lecture. Yeah, it's pretty much universal because geography is something that, it just, the questions just get a little more complex as your level of complexity increases in exams. Anyways, so this, last time what we were doing is the types of lavas, and I already explained that there are basically two types of lavas, a basic lava and the acid lavas. Okay, so basic lavas will be those which are high in iron and magnesium and poor in silica. So that is why they will be, how do you say, they are highly fluid, okay, because the content of silica is less. It does not bring about a viscosity, it does not bring great viscosity to the lava, and that is why the lavas remain highly fluid and they flow over long distances. This is very important for us, that the lavas flow over long distances, that the lava is poor in silica, it flows, it is not explosive. Usually now what happens is, वो lava अगर चिपचिपा हो जाए, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा हो, अगर वो गाढ़ा हो एंड वो जल्दी से जम जाए या कंजील हो जाए, तो वो ना ऐसे ऐसे बंद हो जाता है, ओके, सब कुछ बंद कर देता है. देन उसके बाद वो जो नीचे से लावा आने की कोशिश करता है, वो तो ऑब्वियसली प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट, पीपल, दिस लेक्चर इज ओपन टू एवरीबडी, आई सपोज. Because I just saw that ki you people are नहीं क्या asking me stuff on the chat. So yeah, this lecture is open to everybody, I think. Hanji? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, Shaurya, hi. Ma'am, when I was joining, no, ma'am, it was saying the host is going to the another meeting. Another meeting progress. It was showing like that only. Then I joined again, no, ma'am. Then it came. Yes, Shaurya, because there was another lecture going on at that time. But we are here now. Okay? Hello, Rinku ma'am. Hi, sir. Hanji. Yes, this lecture is open for NDA batch and the SPI batch for both. Hello.
This is common lecture for SPI and NDA. Sir, the others are asking what they need to do. Who what need to do? Sir, the 10th standard people. And standard people. Sir, check the chat box. Okay. Rinku ma'am, you can continue. Hello, Rinku ma'am. Ma'am, Rinku ma'am. Sir, Yes, hello, Rinku ma'am. sir, for which class this lecture is? Sir, Rinko ma'am left. Yes, I think she has a network problem. Sir, This lecture is for NDA and the SPI, which I'm confirming that it if it is for सब म्यूट करो ना सबको. Hello. Hello. Kenny. Hello, Karthik. Hey, Karthik, Kenny. बोल अरे अरे बात करना बंद करो, ओळखलं का? यूट्यूब पर लाइव है. Kenny. Kenny. कोण? Rinku ma'am will join us soon. Uh, Students, please wait 5 minutes. Sir, she has joined. Sure, sir. sir, this lecture is for NDA. Yes, this lecture is for अरे अभी SBI जैसे को and लिख के देने NDA. का क्या? इतने बार तो Okay. बोल दिए सर. 100 बार बोल. Hello, students. This lecture is open for all. So I can't share my PPT. I'm making course. Yes. Okay, sir. Hello. Yes. So, yes, sir. Now I can. Thank you. Ma'am, Yes, sir. I want to say something. This lecture is open for all students. If students have the regular lecture at the time, so if he want to attend, he can go and attend that lecture. But if he has not, then he can attend this lecture too. These lectures is optional for RMC, RMS, and but it is for NDA and SPI also. Or yes. Okay. All right. Thank you, sir. Okay. This I'm going to go pretty faster Yes. now, people. Thank you, sir. Okay. RMC and RMS.
All right. So we were discussing what are the different types of lavas, basic lavas or acid lavas. It is important to understand why we are discussing the composition of a lava, because if the lava is rich in iron and magnesium and poor in silica, it means it will not be viscous. गाढ़ा नहीं होगा वो. तो अगर वो गाढ़ा नहीं होगा तो obviously it will not बहुत जल्दी कंजील नहीं करेगा, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई नहीं हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई इट कैन फ्लो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. पतला पतला लावा होगा जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो करेगा. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट विल फॉर्म, हाउ डू यू से दैट, आप उसके हायर प्रोजेक्शंस, ज्यादा ऊपर कौन सा लावा उड़ता है? एक सेकेंड ना, I'll come back to that question. The thing is na, what was I saying? Yeah, I was telling you guys that since this lava actually flows आराम से as in दूर दूर तक जाता है and बहुत जल्दी जाता है, because of that it will easily form flood basalt basins या फिर shield volcanoes. Anything that is widespread in nature will actually be formed by this, okay? By this lava. On the other hand, acid lavas जो होते हैं, they are how do you say, they have a high percentage of silica and so they flow slowly, okay? Say it becomes a little more viscous, viscosity ज्यादा होता है, light colored होते हैं, तो उसकी वजह से they go on flowing for short distances, okay? वो तो इनके जो inclines होंगे ना, अगर मैं basic lava consider करूँ तो उसका जो incline होगा तो वो ऐसा बहुत ज्यादा height तक नहीं जाएगा वो, एंड ऐसा थोड़ा सा स्टीप, यू नो, ऐसे ज्यादा राइज नहीं होगा उसको, ओके? छोटा सा होगा. इट इज मोस्टली, हाउ डू यू से, उसका इंक्लाइन जो होगा या उसका जो हाइट होगा वो कम होगा, ओके? ऑन द अदर हैंड, if you have a acid lava, in case of an acid lava, आपका जो cylindrical vent होगा ना, जहाँ से usually lava बाहर आता है, तो उसका incline काफी steep होता है, okay? Because वो जल्दी से rapidly congeal कर जाएगा and hence ये बनेगा, what do you say, it will not allow, the fact that it's going to solidify very quickly and it is viscous will not let it flow for longer distances. अब जो original जगह है ना, उसका origin का जगह, उससे ज्यादा दूर तक वो नहीं जा सकता. Long mountain ranges, yes, long क्या बोल रहे हैं आप? Long mountain ranges can also be formed because it can flow long distances. नहीं, mountain range नहीं बनाएगा वो. That is not how it goes. Long mountain ranges नहीं बनते हैं आपके उससे. Usually आपका एक mountain का एक ये बनेगा, एक वेंट से, एक वोल्केनिक वेंट से आपका एक माउंटेन बाहर आता है. Usually that is how it goes. अगर आपको माउंटेन की चेंज चाहिए, देन यू आर प्रोबेबली टॉकिंग ऑफ द मिड अटलांटिक रिज. वहां पर आपको माउंटेन्स का रेंज मिल जाएगा, okay? That is where you have. Let me check out few more questions. What were you asking me? Projections किसके ज्यादा हाई होते हैं? प्रोजेक्शन यूजुअली इस बात पे डिपेंड करता है. प्रोजेक्शन एज इन लावा का जो हाइट, जितने हाइट पे लावा ऊपर जाता है ना, वो दैट इज व्हाट यू मीन बाय प्रोजेक्शन, राइट दुरेश? ओके, तो प्रोजेक्शन इज यूजुअली उससे ज्यादा होगा जब आपका यहाँ पर आके वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना, तो ये वेंट बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से ये इसको और ज्यादा प्रेशर से ऊपर आने की कोशिश करता है. तो तब जब ये लावा बाहर आएगा तो ज्यादा फोर्स से, प्रेशर से बाहर आएगा, ओके? इट विल exert more pressure when coming out. So that is why usually बाहर आ जाता है वो. Is there any place in peninsular India having volcanic eruption? No, Shrivardan. We do not have volcanic eruptions in peninsular India. वो जो island है हमारा, वहाँ पे है हमारे पास, लेकिन it is not volcanic eruptions otherwise. Peninsular India में नहीं है. And very thankfully हमको इसमें भी नहीं है. What do you say? थैंक यू. वेरी थैंकफुली हमारे पास हिमालयाज में भी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं है. थैंक यू प्रताप. नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड जो है वो हमारा इकलौता एक्टिव वोल्केनो है. नारकोंडम इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ओके? इट हैज नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इज दैट गुड पीपल? समझा आपको ये? ओके, एवरीबॉडी कैन यू प्लीज कीप योर people, can you please mute yourselves and not unmute yourselves unless you have something to say or contribute to the lecture? Okay, now you come to the different types of volcanoes, okay? A viscosity meaning how thick or how fluid a substance is. Okay, viscosity मतलब अगर बहुत ज्यादा fluid होगा तो फिर उसका viscosity कम है. अगर वो जल्दी से ज्यादा thick होगा तो फिर उसका viscosity ज्यादा है.
Deccan erupted on 7th April 2000. What? Sorry? ये कहाँ पे eruption हो गया आपने यहाँ पे? Rudrish will need to specify that. अरे acid lava मतलब वो मी काय केलं? Okay. I have taken away your permissions to unmute yourselves because you people do not pay mind to keeping yourselves muted, people. All right. I'll explain what basic and acid lavas are again. Basic lavas का मतलब वो होता है जो जिसमें iron and magnesium ज़्यादा होगा and which are poor in silica. Silica की वजह से आपका जो लावा होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है. ओके, तो अगर सिलिका ज़्यादा नहीं होगा तो लावा गाढ़ा नहीं बनेगा. इसका मतलब वो एकदम फ्लूइड होगा, पानी की तरह, नॉट पानी की तरह एग्जैक्टली, बट काफी एकदम ही यू नो इट इज लाइक फायर की तरह आराम से दूर तक फ्लो करके जाता है वो. ओके, लिक्विड फायर की तरह बहुत आराम से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो करता है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर लावा एक्सप्लोसिव ना हो, अगर वो क्वाइटली फ्लो करे एंड रेडिली फ्लो करे तो वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक बनाता है. तो बेसिक लावा जो होता है वो एक्सटेंसिव प्लेटोज बनाता है. ओके, डिस्टेंस जो होगा वो लावा जो कवर करता है वो डिस्टेंस ज्यादा होगा. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड या इट विल फ्लो स्टेडिली, बहुत स्टेडिली फ्लो करेगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा, लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करेगा. ऑन दी अदर हैंड एसिड लावास जो होते हैं वो यूजुअली टॉल माउंटेन्स बनाते हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो कम होता है. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड इज लेस. यहाँ पर माउंटेन्स का हाइट ज्यादा नहीं होता है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड इज मोर इन बेसिक लावास. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? नो श्रीवर्धन, इनफैक्ट लावास जो होते हैं ना, अच्छा रियूनियन आइलैंड्स में इरप्शन हुआ था. अरे यार वो रियूनियन आइलैंड कहाँ हम हमारे साथ जोड़ेंगे यार, वो नहीं, रियूनियन आइलैंड्स इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. यस, लावास यूजफुल होते हैं. आपकी जो जावा है ना, जावा आइलैंड्स इंडोनेशिया के, या फिर वेस्ट इंडीज में भी एक मार्टिनिक करके आइलैंड्स है, तो वहां पर भी जब जब आपको लावा के मेजर वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं ना, तो वहां पे जो उसके जो रिमेन्स रह जाते हैं आफ्टर द इरप्शन इज डन, वहां की जो नई जमीन बन जाती है या फिर वोल्केनिक एशेस जो होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल. उसमें वो बहुत फर्टाइल बना देते हैं लैंड को, एंड उसकी वजह से दैट इज द रीजन व्हाई आपका हाउ डू यू से द वहां पे एग्रीकल्चर बहुत फेमस हो जाता है. ओके, तो people, in fact the problem is people that usually जब ये eruptions हो जाते हैं तो उसके बाद people tend to settle more in these areas because वहाँ पे fertility बढ़ जाती है. Okay, after a volcanic eruption, a few years after a volcanic eruption, there is a higher percentage of people which try to settle in those areas because the the fertility of the soil has increased, and then it becomes a problem जब एक पूरा town settle हो जाता है and now the volcano wants to erupt again. एंड वो कोई ऐसे वोल्केनिक इरप्शंस का आप ऐसे कोई ये नहीं लगाते हो कि नहीं वोल्केनिक इरप्शन आज से 35 साल बाद वापस होगा, ऐसा स्कीम नहीं होता है. वोल्केनो का जब मर्जी हो जाता है तो वो इरप्ट कर जाता है. ओके, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो मून पे वोल्केनो कौन सा है उसका नाम पूछ रहे हैं आप मुझको, आई हैव टू लुक दैट अप. फुजियामा, उसको तो बहुत ही मुश्किल है. उस वोल्केनो को तो अभी हम एक्टिव भी बुलाते हैं, एक्सटिंक्ट भी बुलाते हैं, बिकॉज इट हैज नॉट erupted in a long time. I'll have to look that up, Sridhardhan. I'll check that up. Okay, is that understood people now? अभी समझा आपको ये? हाँ, बिगेस्ट वोल्केनो बाय व्हाट? सबसे बड़ा वोल्केनो मौना लोआ समझा जाता है, हवाई में है, हवाई में मौना लोआ, उसको सबसे बड़ा वोल्केनो समझा जाता है. स्मॉलेस्ट, अरे यार मैं क्या विकिपीडिया लगती हूँ आपको, देखना पड़ेगा मुझको. आई हैव टू चेक आउट द स्टैट्स देयर. ओके, ये जो आप लोग मुझको ये कर रहे हैं, व्हाट यू से प्राइवेटली भेज रहे, वो मुझको इस पे भेजिए ना, व्हाट यू से पब्लिक में भेजिए ना, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी चेक्ड आउट बाय अदर पीपल आल्सो. अरे no people, no, I'm no encyclopedia of geography. I learned a lot. In fact आज बैठे बैठे नहीं, आप मुझे मेरे सारे ट्रैवलर्स याद आ गए जो आज सर बता रहे थे ना. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिवाइज योर नॉलेज. एनीवेज, तो ये शील्ड वोल्केनोस, अभी आपके टाइप्स ऑफ वोल्केनोस कौन से होते हैं? शील्ड वोल्केनोस, कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनोस, कैल्डेरास एंड फिशर या फ्लड बेसिन्स. ओके, फ्लड बसॉल्ट बेसिन्स जो होते हैं या फ्लड बसॉल्ट प्रोविंसेस जो होते हैं वो वाले. ऑलराइट, so these are what we are going to study, okay, one by one.
आप इसको जरा देख लीजिए, मैं आपका अटेंडेंस ले लूं, फिर हम झट से आगे चले जाते हैं। दिस इज ना हम जब वोल्केनो स्टडी करेंगे ना पीपल, सो देर इज ऑलवेज वोल्केनोस को ना देखिएगा कि किस तरह का लावा बनता है, कौन से एरियाज में बनते हैं, वेदर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड लावा और वेदर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेसिक लावा। सेकेंडली किस एरियाज में बनते हैं, यूजुअली आपके एरिया के हिसाब से, यूजुअली एक एरिया के वोल्केनोस आपको एक टाइप के भी नजर आएंगे, वेरी रेयरली डज दैट यू नो, ऐसा नहीं होता है कि एक शील्ड वोल्केनो एंड उसके बाजू में सीधे सीधे एक स्ट्रैटो वोल्केनो खड़ा हो गया है। ओके, दैट इज नॉट यूजुअली हाउ दिस वर्क्स। यहाँ पर कोई है जो सिर्फ इससे ज्वाइन कर गए हैं 9763212909, आप बस आपने अपना नाम नहीं डाला है, तो प्लीज एवरीबडी put in your names and numbers if you are here, because this becomes difficult to go ahead and have a attendance after that. Okay. All right. Okay, we're done. हाँ जी, there is no renaming option. ये next time करेंगे हम। मैं अभी I am not going to go around trying to see if you guys can rename yourselves, because I need to explain to you what shield volcanoes are. The first and a very how do you say, interesting type of volcano is a shield volcano. Okay, is there any way to identify volcanic eruption is going to take place? Sure, कुछ signs होते हैं, people do study signs to see how you know volcanic eruptions do occur. जैसे usually there are signs to, कुछ activity पहले दिखती है ना आपको, थोड़ा बहुत ऐसे seismic movement मिलता है earthquakes के पहले भी, तो आपको volcanoes को लेकर भी seismic movement मिलता है। Usually आसपास का पानी जो होता है ना, that starts to you know कभी कभी थोड़ा सा warm हो जाता है। हाँ, वो animals and birds के behavior को लेकर भी predict किया जाता है, that is also one way of doing it. But once again, if you're looking only into the technical part of it, then usually you will have to look if वो जो volcanic activity होती है, it exhibits itself in underground water, या फिर वहाँ पर आसपास कोई geysers या hot springs होंगे तो उसको study करना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है। and those signs, छोटे छोटे earthquakes, thank you, छोटे छोटे earthquakes भी usually, earthquake and volcanic eruptions, अगर कोई area होगा जो दोनों की तरफ ये होगा what do you say, अगर एरिया होगा which is vulnerable to both earthquakes and as well as volcanic eruptions, then एक दूसरे को influence करता है, one is a how do you say, a precursor for the other. Okay, so you have to take care of that also, check that also. All right, तो ये रहे अभी आपके शील्ड वोल्केनोस। तो शील्ड वोल्केनोस जो होते हैं ना, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द कोनिकल वोल्केनोस ऑफ द अर्थ। ओके, जितने आपको कोनिकल वोल्केनोस मिलते हैं ना, वंस अगेन उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि रादर दिस इज द डेफिनेशन स्पेसिफाइज कि इट्स अ कोनिकल वोल्केनो। ओके, कोनिकल वोल्केनो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस, वो जो डेक्कन प्लेटो या डेक्कन ट्रैप्स या कोलंबिया स्नेक प्लेटो जैसे फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस होते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कोन्स, जहाँ आपके कोन्स बनेंगे, ऐसे वाले चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब ये जो लावा होता है ये एक्सट्रीमली फ्लूइड होता है। ओके, अरे यार आई डोंट वांट टू मुझे ना टाइम नहीं वेस्ट करना है, लोगों को जाओ करके रीनेम करो एंड ये सारी चीजें करो। कहाँ गया? हाउ डू आई गिव परमिशंस टू रीनेम? It's okay, I don't, people can rename themselves next time. I don't want to waste time. I actually need to explain to you what shield volcanoes are. Okay, तो ये जो फ्लूइड लावा होता है, इट इज एक्सट्रीमली पुअर इन सिलिका, मोस्टली बसॉल्टी होता है, तो वो लंबा लंबा डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करता है। ओके, एंड बहुत कम एक्सप्लोजिविटी से इरप्ट करता है। एक्सप्लोजिविटी उसका कम होगा बिकॉज सिलिका का कंटेंट कम है। ओके, सिलिका का कंटेंट कम है तो वो बार बार हर जगह पे रैपिडली कंजील नहीं हो रहा है एंड उसका एंट्रेंस ब्लॉक नहीं होता है, रादर वो जो वेंट है, ये जो वेंट है ना जहाँ से वो बाहर आ रहा है,
सी दिस वेंट इज वेयर इट इज कमिंग आउट फ्रॉम ना, तो इस वेंट से बाहर आते वक्त उसको बार बार कोई ऐसे प्लग नहीं हो रहा है वो वेंट, इट इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, बिकॉज ऑफ विच वो लावा अच्छे से आराम से खुशी खुशी बाहर आ जाता है। ओके, एंड ये देखिए कितना जेंटली राइजिंग स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कितना जेंटली राइजिंग है, इट इज नॉट अ वेरी स्टीप स्लोप। ओके, एंड यहाँ का जो ये होगा ना टॉप, आफ्टर दिस वोल्केनो हैज इरप्टेड, जब ये टॉप बनेगा वो भी थोड़ा सा फ्लैट बॉटम्ड होगा। ओके, ऐसा वाला कोनिकल शेप नहीं मिलेगा आपको, दिस इज नॉट हाउ यू विल गेट। ओके, यू विल गेट मोर ऑफ अ डोम शेप थिंग, इसीलिए उसको शील्ड बुलाते हैं। शील्ड बिकॉज यू नो हाउ शील्ड का ये कैसे होता है, वो तलवार वाला शील्ड देखा है आपने, ऐसा फ्लैट होता है एंड सिर्फ बीच में एक छोटा सा राइज होता है, राइट? ओके, सो ढाल की तरह, वेरी करेक्ट, सो दैट इज हाउ इट गोज। yes Rudresh, so they have, इसके examples are very famous examples are, and ये question आपको exam में पूछा जाता है। हवाईयन वोल्केनोज जो है they are very famous examples of shield volcanoes. okay, तो आपको Mauna Loa मिलता है and Kilauea, I really don't know यार how to pronounce this ऐसे नहीं, ये हवाईयन नाम नहीं आते मुझको हवाई में सिर्फ एक ही नाम प्रोनाउंस करने को आता है, कियानो, बिकॉज वो मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है। ओके, so here you go, Mauna Loa and Kilauea. Okay, Kilauea ऐसे कुछ नाम है, तो this is the largest volcano. Thank you. Mauna Loa is the largest volcano by mass. By mass it is the largest volcano. Okay, इससे बड़ा volcano आपको चाहिए तो फिर आपको जाके वो जापान के पास कोई proper massive है वहां पे मिलेगा आपको। ओके, अदरवाइज आपके पास पूरे अर्थ पे इससे बड़ा वाला वोल्केनो नहीं है। बड़ा वाला मतलब लंबा वाला की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बड़ा वाला मतलब मास से जो बहुत बड़ा होगा ऐसा वोल्केनो। okay, and it is the largest volcano on the earth. एक मिनट, what are you people telling me now? हाँ, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग लावा से, हमारे जितने भी इग्नियस रॉक्स है उसको जब हम माइन करेंगे तो उसमें से हमको कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड इसका ब्लैक सॉइल बनता है, इग्नियस रॉक्स का जो होता है ना वो वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन के बाद उसका ब्लैक सॉइल बनता है। ब्लैक सॉइल के किस्से तो हमको पता है, उसमें इतना लावा का टेम्परेचर, एक मिनट, लेट मी फिनिश द ब्लैक सॉइल का थिंग। ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर गुड फॉर द सॉइल, आई मीन विच आर गुड फॉर द प्लांट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम वहाँ पे बहुत ये मेंटेन करते हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स एंड थिंग्स ऐसे। लावा का टेम्परेचर अभी ये लावा ज्यादा हॉट होते हैं, शील्ड वोल्केनोज के जो लावास होते हैं ना दे आर कंसिडर्ड रियली हॉट। उनका टेम्परेचर ना कुछ 1800 के तक भी जा सकता है, 1800 डिग्री सेल्सियस वगैरह के पास, दैट इज रियली हाई टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, दे मेल्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वे, बहुत खतरनाक फ्लूइड होते हैं लावास। 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, बाप रे। ओके, मैंने तो 1800 सुना था। ओके ठीक है, चलेगा। हाँ, अभी गुड हियर पीपल, समझा आपको ये? इसको the things that you need to remember when it comes to shield volcanoes are कि ये flattish structures होते हैं, dome shaped बनते हैं, ये देखिए ऐसा नीचे से magma chamber से आपका लावा ऊपर आता है vent के थ्रू, and ये solid lava के layers बनते हैं। ये how is a volcano formed? बच्चा which standard are you in? वीरेंद्र? यूजुअली ना ये लावा ऐसे, ओके ठीक है, फॉर एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम, ये रहा आपका सिलेंड्रिकल वेल्ट, यहाँ से लावा फर्स्ट टाइम बाहर आता है एंड देन सिंस वो फ्लूइड होगा तो वो यहाँ पे स्प्रेड करेगा, फिर ये जब सॉलिडिफाई होता है तो थोड़ा और करके इसका हाइट ऐसे बढ़ते जाता है। लावा यूजुअली लेयर्स, वोल्केनोज यूजुअली लेयर्स में बनते हैं। ओके, दैट इज हाउ इट बिकम्स। Sinan, I'll come to that when I teach volcanoes. Okay, how lava forms igneous after cooling and solidifying, it will form igneous rocks. Okay, all right, I guess we all have the answers now. We'll move on to the second volcano. This is very important. हमारा खुद का प्यारा पैरन आइलैंड, ये भी यही का है, ये भी इसी टाइप का वोल्केनो है। ओके, दिस इज द सेम टाइप ऑफ वोल्केनो व्हिच इज अ स्ट्रैटो वोल्केनो। ओके, स्ट्रैटो का मतलब क्या, स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? लेयर्स। ओके, लेयर्स अपॉन लेयर्स, दैट इज व्हाट स्ट्रैटो वोल्केनो मींस, दैट इज व्हाट स्ट्रैटा मींस। सो स्ट्रैटो वोल्केनो मींस यू विल हैव लेयर्स अपॉन लेयर्स। ये वाला फिगर दिख रहा है आपको? Hello, Rinku ma'am. Yes sir, Sorry for the interruption. Actually, it's time. Zinat ma'am is waiting for her lecture. No problem sir, I'll stop the lecture. Thank you everyone, thank you for your time.